dear nursing officer. I am your Chandramani and you are watching Nanda Nursing Live YouTube channel. So friends, आपण मानक ପାଇଁ गोटे मोर नुआ प्रयास एंड न्यू कंटेंट स्टार्ट करबा को जाउची जहार ना हैला नर्सिंग मेमोरी कैप्सूल. सो वीडियोटा को स्टार्टिंग रो लास्ट पर्यंत देखंतु काहे कि ना आपण मानक ପାଇଁ ए मेमोरी कैप्सूल मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर ऑल अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वीडियो ताको शीघ्र शीघ्र लाइक कर दियंतु एंड शेयर कर दियंतु. आउ जदि चैनल फर्स्ट टाइम देखुचंती ताहेले सब्सक्राइब करबा पई भूलंतुनी. सब्सक्राइब द चैनल एंड ता सहित प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक डिस्कशन. सो चलंतु देखिबा किछि इंपोर्टेंट नॉर्मल वैल्यू जोटा रिपीटेडली पचारुची सबो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे. सो फर्स्ट देखिबा नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर. सो नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर हैला 0 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O और 1 to 6 mm of Hg. देन नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज 5 to 15 mm of Hg और 7.5 to 20 centimeter of H2O. Then normal intraocular pressure or that is eye pressure. So normal intraocular pressure is 10 to 21 mm of Hg. Then normal intra-abdominal pressure is 5 to 7 mm of Hg. Then normal intrapleural pressure 5 centimeter of H2O. Next, normal pleural pressure plus 5 mm of Hg. Normal intrapulpal pressure 14.1 to 32.6 centimeter of H2O. Then cardiac index, normal cardiac index equal to cardiac output divided by body surface area. So normal cardiac index is 4.0 to 8.0 liter per minute. So cardiac output equal to heart rate multiply stroke volume divided by 1000. So normal cardiac output is 2.5 to 4.0 liter per minute per meter square. Then normal stroke volume equal to cardiac output divided by heart rate multiply 1000. So normal stroke volume equal to 60 to 100 ml per beat. Then normal capnography equal to 35 to 45 mm of Hg. Then normal cardiothoracic ratio is 0.42 to 0.50 diameter. Then normal capillary refill time is less than 2 seconds. Then normal anion gap is 8 to 12 milli equivalent per liter if without potassium. यदि पोटासियम पेशेंट नौनी पोटासियम रिलेटेड मेडिसिन या सिरप यदि नौनी ताहले नॉर्मल एनायन गैप होची 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. और इफ पोटासियम इज गिवन जदि पेशेंट को पोटासियम दिया होची ताहले नॉर्मल एनायन गैप हैला 12 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. देन नॉर्मल CRP that is C reactive protein, normal C reactive protein equal to 10 milligram per liter. Then normal D dimer is less than 0.50. Then normal platelets count is 1,50,000 to 4,50,000 per microliter of blood. Then normal creatinine. So in adult 0.74 to 1.35 mg per dl or 65.4 to 119.3 micromoles per liter. In women 0.59 to 1.04
mg for dl or 52.2 to 91.9 micromoles per liter. Then normal erythrocyte sedimentation rate. Normal ESR equal to 0 to 15 mm/hour. So normal ESR is 0 to 15 millimeters per hour. So in above 50 years of male, normal ESR is 0 to 20 millimeters per hour, and in above 50 years of female, normal ESR value is 0 to 30 millimeters per hour. In children, normal ESR value is 0 to 10 millimeters per hour. Then pH of blood. So normal pH of blood is 7.35 to 7.45. Then normal HbA1c. HbA1c normal value is 4% to 5.6%. If 5.7% to 6.4% is HbA1c value, then it is considered as pre-diabetes patient. If 6.5% or higher its value of HbA1c, then patient is considered as diabetic. Then last question of our today nursing memory capsule, that is CPP. So normal CPP, that is cerebral perfusion pressure, is 60 to 80 mm of Hg. So thank you so much friends.